वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम देखेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स विद द सिसिलियन डिफेंस और कैसे हम इस मिस्टेक्स को पनिश कर सकते हैं। सिसिलियन डिफेंस सबसे ज्यादा खेले जाने वाली चेस ओपनिंग है, इसलिए आप इस पोजीशंस को बहुत ज्यादा बार एनकाउंटर कर सकते हैं। So let's start this video without wasting any time. Sicilian defense starts with e4, c5. The main aim is to target the d4 square. Knight f3, knight c6, d4, e cross d4, knight cross d4. This position is called the open Sicilian defense. एमेच्योर लेवल पे लोग बहुत ज्यादा टेम्पटेड होता है एक्सचेंजेस के लिए। इस पोजीशन पे अगर ब्लैक नाइट टेक्स नाइट खेलता है तो ये एक पोजिशनल मिस्टेक है, बिकॉज आफ्टर क्वीन टेक्स आप देख सकते हैं आपका क्वीन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीस है एट द सेंटर ऑफ द बोर्ड, और इसे भगाने के लिए कोई पॉन या फिर कोई पीस डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता। इस पोजीशन पे ब्लैक ना अपना नाइट f6 पे निकाल सकता है बिकॉज ऑफ e5। यहाँ पे ब्लैक सिंपली अपना नाइट को रिट्रीट करने के लिए फोर्स होगा, और अगर नाइट h5 देन वी कैन ट्रैप द नाइट। इसीलिए इस पोजीशन पे ब्लैक t6 खेलता है। व्हाइट सिंपली डेवलप्स अनदर पीस, और अभी ब्लैक के लिए एक बहुत ज्यादा टेम्पटिंग मूव है, वो है d5, एमिंग टू किक ऑफ द क्वीन फ्रॉम दैट स्क्वायर। पर ये d5 मूव के लिए ब्लैक का लाइट स्क्वायर बहुत ही ज्यादा वीकन हो चुका है किंग के सामने, और इसी का एडवांटेज उठाते हुए हम लोग खेलेंगे बिशप b5 चेक, बिशप d7, फिर हम लोग क्वीन को स्टैक कर देंगे उसी सेम डायगोनल पे। ब्लैक चाहेगा ये बिशप्स और क्वीन एक्सचेंज हो जाए और ये थ्रेट कम हो जाए, सो बिशप टेक्स बिशप, एंड नाउ वी प्ले नाइट टेक्स बिशप, बिकॉज अगला मूव में एक डिस्कवर अटैक हो सकता है यूजिंग द नाइट एंड द क्वीन। वही डिस्कवर अटैक बचाने के लिए ब्लैक खेलता है क्वीन टू d7, व्हिच इज अ बिग ब्लंडर, क्योंकि वी कैन प्ले नाइट टू c7 एनीवे। थैंक्स टू द व्हाइट क्वीन द ब्लैक क्वीन इज पिन टू द किंग, और ये नाइट को टेक नहीं कर सकता। So the king comes to d8 and we can simply take on the queen. King takes and we win a free rook. और अब देख सकते हैं ये इजीली एक विनिंग पोजीशन है व्हाइट के लिए। Now coming to the next step using the black pieces. The game starts with e4, c5, knight f3, knight c6, d4, e cross d4, knight cross d4. Then we can simply develop our second knight to the f6 square. White plays knight c3 and then e5. लेकिन इस मूव के बाद if white captures on the knight, then we can simply capture the knight using our b pawn and then look to control the center using d5. White now plays bishop to g5, pinning the knight to the queen, and black now can play rook to b8 because black के पास b file open है rook के लिए, and now white इस pawn को बचाने के लिए rook to b1 खेल सकता है, and then we can go queen to a5. Firstly, we unpin a queen from the knight, and secondly, we pin their knight on the c3 square to the king. But what's the main idea? If white takes on our knight, can you find the brilliant move? The brilliant move is to sacrifice our rook, because after rook takes, queen cross knight check, then we can win the rook. बट हम ये नोटिस करेंगे कि इस पोजीशन में ब्लैक को बस एक पॉन का एडवांटेज हुआ है, बिकॉज व्हाइट अभी ये बिशप लेके वापस रिट्रीट कर सकता है। नो, व्हाइट cannot play this move because after this move we have bishop to b5 pinning the queen to the king, and now white can simply resign the match because white would lose his queen in the next move. Now coming to the third and the final trap of this video. The match starts with e4, c5, knight f3, d6, the modern Sicilian variation. White plays d4, pawn takes, knight takes, knight f6. Then white plays bishop to c4. The black knight can simply take on our central pawn, and it does so. Now we play queen to h5, threatening the f7 square. If black tries to remove the queen by using g6, then we can come to d5 square, threaten the knight and also the f7 square, and white is easily dominating this game. So the logical move for black is e6. White plays bishop to b5 check, and the most common move is position that you would encounter is bishop to d7. Can you find a great move in this position? इस position पे white plays knight cross e6. The bishop cannot take on the knight because it is pinned by the bishop, and the pawn cannot take on the knight because it is pinned by the queen, and also the knight attacks the queen simultaneously. Now the queen has to move,
and a very natural move in this position, which seems like a winning move for black, that is queen to a5 check. So now how can you defend this position? Because now your bishop is attacked by the queen and the bishop, and it has only one defender. You don't care about the bishop. You play bishop to e2. If the knight takes on bishop, then bishop cross bishop check, and black loses the queen. And if the queen takes on the bishop, then we can play knight to c7, forking the king and the queen. So this game is all done and dusted for black. White can easily win this from you. Thank you for watching this video till the end. I hope that you do not make these common mistakes, and also if your opponent plays these moves, you can now punish them from what you have learned in this video. Thank you so much, and also drop your suggestions for the next video.